So, all right, guys. So, this is a video where we will be seeing कि 2 point model बनता कैसे है. And so what I'll do is that this is an example जहाँ पर हम exactly 2 point model को execute होते हुए देखेंगे. ठीक है. तो first of all, any topic that comes should be here. पहले आप अपना टॉपिक लिखते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक जैसे टॉपिक है, शुड स्मोकिंग बी बैंड. ठीक है ना, जैसे ये टॉपिक है हमारा. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप अपने सारे थॉट्स को एक बार कलेक्ट कर लो अपने माइंड में एंड फिगर आउट करो एंड इस फ्रेमवर्क के अंदर डालना शुरू करना है. ठीक है. तो विल बी हैविंग कि भाई हाँ, व्हाट डू यू थिंक. चलो ठीक है. फर्स्ट इज व्हाट यू हैव टू से इज दैट स्टैंड. चलो ठीक है, यस. आप सोचते हो यस. ठीक है ना. तो शुड स्मोकिंग बी बैन, यस. ओके. अब ऐसा क्यों सोचते हो या फिर ऐसा क्यों है. तो वो जो उसका आंसर है ना, दैट इज योर मेन पॉइंट. ठीक है. तो हमें मेन पॉइंट्स अकॉर्डिंगली लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका मेन पॉइंट मैं सोचता हूँ, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, स्मोकिंग किल्स आर प्रेजेंट. स्मोकिंग हमारे प्रेजेंट को किल कर देती है. ओके. एंड इन आर फ्यूचर. मेरे दो पॉइंट्स बन गए. स्मोकिंग शुड बी बैंड बिकॉज स्मोकिंग किल्स आर प्रेजेंट एंड स्मोकिंग किल्स आर फ्यूचर. ठीक है. दैट इज लाइक माय टू मेन पॉइंट्स. नाउ आई वुड वांट टू सपोर्ट देम. हम इन पॉइंट्स के अंदर सपोर्ट भी डालना पड़ेगा ना कि व्हाई या फिर इसको कैसे करेंगे. तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई विल शेयर अ फैक्ट हियर एंड आई विल शेयर अ स्टोरी ऑफ अ who died leaving there. Okay. So I would want to use the support too of a father who died, leaving their family in a mist. Right? Due to lung cancer. ठीक है. जज मत करना प्लीज. ओके. सो आई वुड वांट टू शेयर अ स्टोरी ऑन दिस. एक फैक्ट मैं यहाँ पर शेयर करूंगा जो कि हमारे इसमें निकल के आता है. अभी वो क्या है, आई सर्च ऑन वेब एंड विल फिगर इट आउट. और अभी मेरे को ये समझना है. दूसरा, स्मोकिंग किल्स आर फ्यूचर. फ्यूचर कैसे किल करता है. ओके. तो बेसिकली मैं इसमें ऐसे सोचता हूँ कि फ्यूचर कैसे किल करता है कि एक तो हमारा पॉपुलेशन का पॉपुलेशन का एज, जो एज है बेसिकली वो उससे कम हो जाती है. ठीक है ना. पॉपुलेशन डेथ एज डिक्रीजेस. तो बेसिकली जो हमारी कमिंग पॉपुलेशन है या कमिंग जनरेशन है उसकी लाइफ स्पैन स्मॉल हो जाएगा. लाइफ स्पैन डिक्रीजेस का एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे. एंड देन मैं एक एक और कुछ करना चाहता हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता. तो ऐसे जरूरी नहीं है आपको एकदम सारी चीजें आ जाएंगी. ब्रू इट अ लिटिल बिट. ठीक है. सो विल जस्ट गो ऑन ऑनलाइन एंड विल फिगर आउट कि भाई क्या कुछ फैक्ट्स हैं ऑनलाइन, क्या पड़ा हुआ है. तो इन 10 फैक्ट्स, स्मोकिंग के 10 फैक्ट्स निकालते हैं. स्मोकिंग किल्स कैंसर, गम डिसीज, ये वो फैक्ट्स वो होते हैं यूजुअली जहाँ नंबर्स होते हैं कुछ जिसको आप एस्टोनिशिंगली
बता सकते हो या फिर अपने ऑडियंस का कैप्चर कर सकते हो माइंड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे को सही लग रहा है, स्मोकिंग cigarette contains 4,000 chemicals including nicotine, carbon monoxide and many cancer causing। इंटरेस्टिंग। तो ये मेरे को अच्छा तो लग रहा है, बट ये मेरा 2 पॉइंट मॉडल में प्रेजेंट में और पास्ट में तो नहीं जा रहा, लेकिन शायद ओपनर हो सकता है ना, कि भाई ऐसा कुछ बात कर सकते हैं कि मैं आपको एक जहरीला केमिकल पीने के लिए दे दूं तो क्या आप पियोगे? नहीं पियोगे। पर डेली बेसिस पे आप 4,000 केमिकल्स को एक साथ पी रहे हो, दैट इज व्हाट इज स्मोकिंग एंड दैट इज किलिंग यू। अंडरस्टैंड? तो ऐसा कुछ करके ना आप कुछ भी फैक्ट्स को आप निकाल के ना एक वो बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके मैं स्क्रिप्ट ना करूंगा, फिर स्टोरी लेके आऊंगा। फिर नीचे आते हैं और कोई फैक्ट ढूंढते हैं इन द सेम वे, क्योंकि मेरे को आज प्रेजेंट में देखना है ना, तो स्किल्स आर प्रेजेंट, मैं उसमें फिगर आउट करना चाह रहा हूँ। चलो, ये देखिए, जैसे ये एक फैक्ट है, 1 out of 5 डेथ्स इन द यूएस ईच ईयर। क्या है ये? तो ये अलग अलग फैक्ट्स लिखे हुए हैं। नाउ सी दिस, more than 2,500 infants under 1 year of age are attributed to smoking by mother। 2,500 बच्चे, उनकी मदर स्मोक करती है इसलिए वो किल हो जाते हैं। एक माँ ही अपने बच्चों को। 40 to 50 में हार्ट रेट बेस्ड डिसीजेज 9 times मोर देन द स्मोकर टू नॉन स्मोकर। तो ऐसे करके आप फैक्ट्स उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे ये वाला फैक्ट मेरे को काफी अच्छा लगा। ठीक है, यू हैव टू वेट योर फैक्ट्स की फिगर आउट करो कि वो फैक्ट सही है या नहीं है, बट ये फैक्ट मेरे को अच्छा लगा एंड आई वुड वांट टू पुट इट हियर। तो इससे मैं आज बताऊंगा कि ये आज की सिचुएशन है एंड दैट इज व्हाई इट इज किलिंग आवर प्रेजेंट। पीपल आर डाइंग अबाउट इट एंड एवरीथिंग। And then you talk about another story of a father who died because of lung cancer and leaving their family behind. That is our first main point is completed. Now second main point में आते हैं, smoking kills our future, तो लाइफ स्पैन डिक्रीजेस फैक्ट। तो वो हमें को फिर से इससे मिल गया था। वो एक ये वाला अच्छा था है ना। ऐसे फैक्ट्स ना आपको हर जगह मिल जाएंगे, जस्ट जस्ट ट्राई टू सर्च ऑन इंटरनेट अबाउट इट। तो एक ये वाला हमारे को फैक्ट लगा, मेरे को अच्छा लगा। Among men 40 to 50, age 40 to 50, deaths from heart disease are 9 times more common in smokers than in non-smokers। ये बहुत ही astonishing फैक्ट है। ठीक है। हम्म, ठीक है, सॉर्टेड है। इसमें हमारा जो सेकंड मेन पॉइंट है ना, मैं उसमें एक फ्यूचर के अराउंड कुछ बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक तो फैक्ट बता दिया है। ठीक है ना? और एक और चीज मैं कुछ बात करूंगा, मे बी कॉग्निटिव थिंकिंग पे है। तो मैं सोचता हूँ कि स्मोकिंग क्या हमारे थिंकिंग पे क्या पैटर्न पड़ता है। स्मोकिंग अफेक्ट आर थिंकिंग इन, स्मोकिंग का थिंकिंग क्या इफेक्ट पड़ता है, मे बी ये वी कैन टॉक। Okay, so see this now. Long-term smoking can really significantly impair the cognitive function, leading to difficulties with memory, concentration, decision making, and
overall thinking abilities to damage the brain structure and function, potentially increasing the risk of dementia and accelerating cognitive decline with age. So it affects your brain, I would say. And brain damage is something that we are talking about here. Memory problems are going, है ना? So ये तो हमारे फ्यूचर को ऐसे ही खराब कर सकता है ना? So I think this way we can put across um, their study which has long-term smoking leads to and loss. Right. Now what you have done is आपने इसको थोड़ा सा और लिख लिया कि भाई आपके प्रीव्यू सॉर्ट हो गया है ना, छोटा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट टू। तो इट्स अ स्टडी लॉन्ग टर्म स्मोकिंग लीड्स टू ब्रेन डैमेज एंड मेमोरी लॉस इन ओल्ड एज। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं फ्यूचर हमारा फिल कर रहा है। अब अब हमारा स्पीच कहाँ तक पहुंचा? हमने ऑलरेडी कर लिया ना, स्मोकिंग ये आ गया, सिगरेट्स आ गया, बैन आ गया, रिव्यू में मेन पॉइंट बताने होते हैं, सपोर्ट में ये दो स्टोरीज हैं, फिर उसके बाद ये दो पॉइंट्स यहाँ पे हैं, रिव्यू आपने कर दिया, एक क्लोजर और आपको चाहिए है ना। तो अभी तो हमने क्लोजर फिगर आउट नहीं किया है। जरूरी नहीं है हर चीज जो है ना वो एक ही ऑर्डर में आएगा, जिस भी ऑर्डर में निकल के आ रही है बाद में इसको शफल भी कर सकते हैं। बट क्लोजर क्या होगा? क्लोजर आई वुड वांट टू नो a story of passive. I would want to share a story of something which should touch the heart of the people. जो कोई स्मोकर है तो वो उसको फील होना चाहिए कि हाँ यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, और जो नॉन स्मोकर है उसको मे बी उस मैसेज को आउट करना चाहिए। इस टाइप का मेरा दिमाग है, तो मैं क्लोजर में करना चाहता हूँ। तो आई वुड वांट टू नो कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए, मे बी हियर नॉट, मे बी हियर ऑन यूट्यूब। आप देखिए, फिगर आउट योर वीडियोज या समथिंग, एंड that way things can be there। जितना कंटेंट आप कंज्यूम करोगे ना उतना you'll be able to mature your content, and that way it becomes interesting। जैसे इसको 10 साल का अस्थमा है ना, और अपनी कहानी बता रहा है, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग राइट। अब इन बच्चों की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है ना, पर अब दे आर विद अस्थमा बिकॉज ऑफ योर स्मोकिंग। So I think that can be a very interesting story. So what I'll do is that I'll just once you see also these images ना, आपको एक विविड हो जाता है कि क्या देखा है आपने, ये बंदा सांस ही नहीं ले पा रहा है आपकी स्मोकिंग की वजह से। आई थिंक यू डोंट हैव अ राइट टू स्पॉइल एनीबॉडीज लाइफ, ऐसा कुछ करके हम बोल सकते हैं। तो अब लास्ट में आते हैं स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड who got us at the age of 10। I think once everything will be in place, already have because we look at it. ओके ऑसम। तो आई थिंक मैंने इसको डाल दिया है, ये हमारा क्लोजर हो गया है, एंड दिस वे वी हैव गॉट दिस होल स्पीच टुगेदर। ठीक है, ये हमने स्टिच कर दिया है। अब मैं आपको, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार ये स्पीच और अच्छी निकल के आती है, और अच्छी निकल के आती है। तो हमेशा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप वर्जन्स निकाल सकते हो। तो आई गिव यू
quick example of this whole speech in one go, and we can take it across. Okay. Um, how many of you like to drink chemicals? Raise your hands. Okay, nobody. How many of you, if given 5 crore rupees, would be able to drink a glass of a chemical? Harmful chemical, by the way. It's not good chemical, it's hard. You will not, right? But what if I told you that on a daily basis, when you encounter with smoke coming out of cigarette, you're already inhaling 4,000 chemicals like carbon monoxide, nicotine, and so on. And all these are deadly cancer causing chemicals. Good morning, everyone. My name is Abhishek Gulia, and today I'll be talking on the topic, should smoking be banned? And in my opinion, there is no second thought about it. It should be banned. It should not be taken ahead and it should be banned for once and for all. My believing on this fact is based on two major reasons, and that are smoking kills our present and smoking kills our future. Let me bring your attention to the first point, which is smoking kills our present. Do you know? Infants who are exposed to smoking, they have a very high amount of death rate within the first 1 year because of smoking done by their mother. So approximately 2,500 infants die just because their mother is into smoking and she can't quit, and that's the way she's killing her baby. Knowing unknowingly, but yeah, she's, and that is the most sad thing that I have seen in the couple of last weeks. I'll give you one more example on this, and that is about a father who is loved by a very cute daughter, and she's a part of a very good family of um, his her brother, and she's there, and then there is his father, and then it is her mother. She's a second class student, and she always is jolly, jumping, figuring things out, full of energy and everything. And so is his brother also, happy go lucky. His father works into marketing. He has been doing a lot of tough jobs all across his career. And nowadays, stress has started to take over. With stress coming in, there's an old habit which he left before his marriage has come back. That is of social smoking. And then he has now become an active smoker. The extent is till the point where he is able to smoke 10 to 15 cigarettes a day. And that is devastating to his health. But yeah, that is what it is. And because our little angel loves her father, so she also feels that supporting him in smoking is essentially part of being a good daughter. 2 years later, she is informed by her mother that her father is known. How can you explain that to a 2-year-old kid? And how can you explain that the killer of your father is none other than the cigarette he used to drink? Cigarette, which was unharmingly always there on the table, which she felt
This is what people do when they become mature. Now their whole life is under stress. The family stability is gone, and the present is nowhere secure. Seeing the plight of this girl, I can convincingly say that smoking kills the present. It kills everything which you have in the present, be it the relationships, be it the future, be it the whole essence of life. Let me come back on the second aspect of this topic, which is smoking not only kills the present, but also kills the future. And to talk about it, I would tell you an astonishing fact. And that is, if you are aged between 40 to 50, you have 9 times more probability to get a heart attack than a non-smoker friend of yours. So, if a heart attack has to come to you, 90% of the time, it is the case, or 9 times, I would say, आपकी probability बढ़ जाती है. And that is crazy because आपने खुद को ही heart attack दे दिया. How is it like your future is nowhere to be seen now? Because what you're doing is you're short. If you don't love your family, if you don't love what you're doing in life and everything, please do smoking. But understand this. अगर ये आपको पता है फिर भी आप कर रहे हैं तो then that's a different case. Then you are taking a conscious choice. पता ही नहीं है तो वो challenge. No, no, first. And do you know when No. you do long-term No, smoking, no. So what happens is that your brain gets damaged followed by and your memory gets all lost. of which are live. And when you are old and if you don't have a functioning brain and you're not able to remember anything, you'll be a burden on your family and you'll be a burden on society. You'll lose the autonomy and the will to take it across. And then it's a living. And I know what you're talking. Challenges we have are in, And you know what I'm talking. deploying new features, launching new Yeah. features. So I think these are the major reasons which make me think that why even if it is killing our present and killing our future, why is it even present? And that is the thing that I leave you guys to think about. In the end, I would like to share a very small story of a child from a family just like yours and mine. At the age of 10, he was diagnosed with asthma. He could not survive without medications because his lungs were exposed to smoke from the city, his parents, passive smoking, active smoking, and so on. What is his fault? Now he has to consume all these medications just to take a breath. I would ask you if you see any, if you are a smoker or if you see anyone smoking, you can directly or indirectly say that that person is responsible for the asthma being created to such small kids, like a 10-year-old kid That translates to a line. grappling on that asthma suction pump to make his life possible. And if this is where humanity is, and I think we are at a danger place. So they're using. I'll leave you with this thought. Impact, Thank you. Just a customer satisfaction. Awesome. All right. So guys, this was the whole speech where मैंने हर part को तोड़ फोड़ के किया है.
द मोर टाइम यू स्पीक द मोर बेटर इट विल बिकम, ठीक है। तो दैट मीन्स यू कैन सी हाउ दिस इज डन, एंड या आप 2-3 बार करोगे ना तो अच्छी से स्टोरी निकल के आती है। इंस्टेड ऑफ स्टोरी का स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, अभी मैं जैसे लास्ट वाली जो स्टोरी है उसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि 10 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे। तो आप शायद आइसक्रीम खाने के बारे में सोच रहे थे, आप होमवर्क के बारे में सोच रहे थे, लेकिन एक बच्चा हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसकी खुद की गलती भी नहीं है, बस वो सांस नहीं ले पाता, और उसके फादर और मदर ने स्मोकिंग करके या उसकी पैसिव स्मोकिंग हो रही थी उसके, और उसको ध्यान नहीं दिया और इस वजह से वो आज इस स्टेट में है। आई वुड आस्क हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इफ यू आर अ स्मोकर, इफ यू see somebody smoking, at the end of the day they are the people who are responsible for this. And please take responsibility of your life and life of people around you to make things and make this world a better place, right? So ending can be मॉडिफाई करते करते ना आपको ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो एक अच्छी स्पीच निकल के आ जाएगी। मस्त चीज ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। I think this is what 2 point model is. Please see this. कोई questions है? Please post in the comments or post it in the group. We will chat and solve them. And इसके ऊपर आप ऐसे ही बना के लेके आओ in the coming week. ठीक है? All the best. और take a topic which is debatable. Thank you.